a string value from the user and then copy this value to another variable and then print both the values. Another to another variable and then print the values of both the variables. ठीक है? Yes, sir. है तो सिंपल। तो आपके पास एक वेरिएबल है, एक नेम वेरिएबल है, एक नेम वन है। यहाँ पे नाम इनपुट कराए, राइट, स्लैश एन हटाए। अब नेम के वैल्यू को किस में कॉपी कर दिए? नेम वन में कॉपी कर दिए और दोनों वैल्यू को प्रिंट करा दिए, नेम और नेम वन। तो नेम और नेम वन दोनों में एक ही वैल्यू आना चाहिए कि अलग अलग वैल्यू आना चाहिए? एक ही आना चाहिए सर। एक ही आना चाहिए, जैसे अमित कुमार लिखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा द वैल्यू ऑफ सोर्स इज अमित कुमार, द डेस्टिनेशन इज ऑल्सो अमित कुमार। दोनों कॉपी हो गया? जी सर। दोनों में सेम वैल्यू आ गया।